Hello, dear students. Very warm welcome to our YouTube channel Bio-Geek. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे TY.B.Sc माइक्रोबायोलॉजी के दो पेपर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी 2 और जो 6 पेपर होगा वो होगा फूड माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और दूसरी बहुत बात कि कुछ स्टूडेंट जो है वो पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि सर जल्द से जल्द बाकी के पेपर भी हमें प्रैक्टिस के लिए दे दीजिएगा। तो देखिए ये दो पेपर भी आपके लिए आ गए हैं। आशा करते हैं कि आपको इससे भी बहुत मदद होगी और दूसरी बात है कि आप पेपर्स जो है वो अपने अदर स्टूडेंट्स को भेजना ना भूलिए। चलिए तो बात करते हैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल पेपर है ये भी। ओके, थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी है, कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, वो याद रखनी है और यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स इन दिस पेपर ऑल्सो। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस देखें। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन क्या होता है, द इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ग्लूटामिक एसिड प्रोडक्शन, फिनाइल एसिटिक एसिड एक्ट एज डैश इन पेनिसिलिन, फर्मेंटेशन सॉल्वेंट हो सकता है, सबस्ट्रेट, एंटीफोम या प्रिकर्सर। ट्रू और फॉल्स एक पूछा गया था, स्टेरेज कैन बी प्यूरिफाइड बाय द अमाइनो सल्फेट प्रेसिपिटेशन और द ऑर्गेनिजम्स यूज्ड फॉर द सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन इज। तो कुछ रह गया है, ओके वन क्वेश्चन, सो मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट यहाँ पे एनी टू लिखा है। ओके सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स ईच, दो ही लेने हैं। What are the protease? Add a note on recovery. Explain the significance of precursor in penicillin biosynthesis. Enlist the steps in production of yogurt. बहुत ही simple से है। Then explain the product recovery and application of the bioethanol। 4 मार्क के लिए पूरा क्वेश्चन है। Then again any two है, देखिए describe the phases in the streptomycin fermentation, describe glutamic acid fermentation with a flow sheet। ओके सो इस तरीके से आपको फ्लो शीट्स के बारे में लिखना है। Then describe the lagering process in a beer. Then illustrate with the help of flow diagram lactic acid fermentation। फिर से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, lactic acid fermentation। ओके, then again any two, describe the any one method of acetic acid fermentation, describe the production of bio emulsifiers, describe the production of semi synthetic penicillin और 4 मार्क के लिए था ripening of cheese। Then question number 5, production of inactivated polio vaccines, pre-treatment in a bioethanol production, baker yeast production, anti-sera production, steroid biotransformation and application of amylin। तो ये देखिए पेपर 1 था, इसमें से ही बहुत क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट आएंगे। हम दो और पेपर आपको देने वाले हैं। देखिए, name the strain used in the large scale production of the glutamic acids. Enlist the microorganism used as a probiotics. Then microorganism used in steroid transformation, alleles, then brewer yeast. Then name microorganism used in penicillin fermentation. देखिए फिर यहाँ पे एनी थ्री, सो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए ये देख के थोड़ा सा चलिए आप, क्योंकि ये हर बार बदलता है इनका। Types of wine, recovery of penicillin, production of rabies vaccine, malt adjuncts, write the steps involved in citric acid recovery. Solid state fermentation repeat आ गया, vinegar production, acetic acid production आ गया repeat, microbial production of bioemulsifier repeat question, bakery yeast repeat questions, describe the recovery of vitamin B12, then anti-tetanus serum, then penicillin production repeat आ गया, aging of wine, recovery of protein repeat आ गया, describe yogurt production repeat आ गया। so यहाँ पे 4 मार्क के लिए, वहां पे 3 मार्क्स के लिए। ऐसे शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर, बायोइथेनॉल प्रोडक्शन आ गया, एस्ट्रेज प्रोडक्शन आ गया, malolactic acid fermentation, then types of beer repeat, steroid transformation repeat, lysine production। थर्ड सेट देख लीजिए। The fermentation occurring in the absence of or nearly absence of free water is called as, okay, enlist any two strains used for the large scale production of the riboflavin, name the attenuated polio vaccine, two organisms used in steroid fermentation, steroid transformation, hope floors in the beer fermentation, any cell line used for the production of viral vaccines, recovery of vitamin B12 repeat, steroid transformation repeat,
process parameters of the glutamic acid production, then semi-synthetic penicillin repeat, explain the three stages during streptomycin fermentation, repeat, raw material used for the bioethanol production, repeat, cheese ripening, repeat, wine defense, malting process, repeat. With the help of flowsheet, explain the large scale production of amylase. Then, steps in yogurt production, repeat. Media for protease production, production of probiotics with respect to the production of strain, production of lactic acid with respect to the production strain. Explain the production of strain with respect to the production strain, process and recovery, repeat why. Biosurfactant, Swiss cheese, Tetansis trapezoid, lagering process, repeat, bakeries repeat, and the byproducts of the ethanol fermentation. So ये कुछ तीन पेपर थे. फोर्थ वाला जो आपका मतलब सिक्स पेपर जो होगा आपका सिक्स पेपर 366 दैट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी. ये भी बहुत सिंपल सा पेपर था. डिफाइन डी वैल्यू, फर्मेंटेड फूड क्या होता है, फूड स्पॉइलेज क्या होता है, डिफाइन टीडीपी, what are the intrinsic factors ISO stands for, then contamination and spoilage of the canned foods, food regulatory authority FDA, contamination of the egg and poultry products, then describe the microbial food poisoning with a suitable example. Again, any two थे यहाँ पे, sensory characters of the food, health effects of the prebiotic, use of the radiation methods for the food preservation, classification of food in detail. Then again, any two, spoilage of cereals and cereal products, textural factors, then extrinsic factors affecting microbial growth in a food. Describe the food infection caused by the Salmonella typhimurium or Salmonella typhi भी कहा जाता है. Then any five, inhibitory substance in food, food sanitation, contamination of spices and condiments, importance of F value, flavor factors of the food and carrot. इसमें से बहुत रिपीट आएंगे देखिए. दूसरा सेट, रेड स्पॉट मीट, स्प्रे ड्राइंग is used in preservation, define TDT, what are prebiotics, probiotics, states the role of FDA in food industries, and what are the GRAS. Spoilage of canned food, repeat आ गया है. Sensory properties of food, repeat आ गया है. Changes in the food preservation by the high temperature, intrinsic factor of the food, repeat. Tetra Pak technology, what are the advantages of it? Food preservation by dehydration, contamination of spices, repeat, food botulism, intermediate moisture food, explain the process of pasteurization. फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे और पैस्चराइजेशन पे क्वेश्चन ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. Health effect of the fermented foods, flavor defects in the food, redox potential of food, canning. Then explain the food poisoning by the S1 plus flavors. Then question number 5, spoilage of cereal products. Repeat आ गया देखो. Safety at the risk probiotics. Justify sugars are semi-perishable food. Inhibitory substance in the food. Food infections versus food poisoning. pH as a factor affecting microbial growth. Third set or the last set, black root onion is caused by spray frying is used in the preservation of what? Define TDP. Repeat. हर एक क्वेश्चन पेपर prebiotics, ISO, then grade preservatives, spoilage of food, organoleptic properties, changes in the food preservation by dehydration, extrinsic factor, tetra Tetra Pak technology, repeat. What is effect of high temperature in the food preservation? Again, repeat. Contamination of the salad dressings, aflatoxins, intermediate moisture foods. Explain the process of dihydrofreezing and dihydrocanning. Fourth one questions. Health effects of fermented foods. Repeat. Textural defects food. Canning. Repeat. Relative humidity of the food. Explain the method of pasteurization. Then spoilage of seafood, safety and risk probiotic, just milk is a perishable food. एक में शुगर था, यहाँ पे अभी मिल्क है. Classification of the food based on the shelf life, role of water activity affecting the growth of microorganism, volatility through the food. So ये थे आपके टोटल 6 पेपर्स, ओके, 2 सब्जेक्ट्स के लिए.
सो इतने करके जाइए, आप मैक्सिमम 25 अबाउट स्कोर्स कर ही देंगे। ओके, सो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। और अगर आपके और कुछ कमेंट्स या और कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज 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 कमेंट करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका भी नाम है बायोगिक बाय आकाश बगाड़े सर। थैंक यू, थैंक यू।